जब जुम्मे को शामी 6 बजे फैर खुल गया तो हमने अपनी अपनी बड़की थी बचाने के लिए इसी तरह बस जिस तरह भी होता था अपना वक्त पूरा करते थे। खाने के लिए भी हमारे पास कोई सामान नहीं था। I do feel as a community, the Christians feel the underdog. हम चाहते हैं कि अंग्रेज से हमारी जान छूट जाए। वो जब चला जाएगा हम आपस में भाई हैं, हम मिल बैठेंगे और जिंदगी गुजारेंगे। जेवर पड़ा था हमारी माँ का, हमने कहा भाई वो तो ले लो, नहीं सामान तो हमारा बाबा कहता कल को ले जाऊंगा। जवाहरलाल नेहरू पाण हुन जे इलेक्शन में आयो। ही अचे पियो त माण्हू पेरे पवण जे लाइ हीअं हीअं ही वरी थुॾा हणंदो अचे। कावड़ में हुयो हो जाइ करे करे स्टेज ताईं कुर्सीअ ते ई न वेठो। हाँ, स्टेज ते बीह ऐं चयईं त मेरे भाइयों, आपको पता है मैं किस काम के लिए आपके पास आया। मैंने सुना है कोई राय साहब कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो गया है। मैं आपसे गुजारिश, छुट्टी तमाम उर्दू वाले, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस इलेक्शन में वोट देकर और कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब करें और राय साहब को शिकस्त दें। अब मैं अपने मुसलमान भाइयों से मुखातिब हूँ। मेरे भाइयों, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मैं चाहता हूँ कि हम भाइयों की तरह रहें। पहली बात जो हम चाहते हैं कि अंग्रेज से हमारी जान छूट जाए। वो जब चला जाएगा हम आपस में भाई हैं, हम मिल बैठेंगे और जिंदगी गुजारेंगे। You should have seen the shout of hooray that went up in the hall, especially from the young ones, because we didn't know. We just thought we were getting a nice long break. But we looked at the seniors' faces, and I remember they were, oh, this must be really bad. That's what's happening. And the way the teachers were walking around with sober faces, and we realized that something bad was happening, and that we realized what was happening. Because all the teachers were so upset and so sad, and they were frightened actually. And they were frightened for all the children under their care. Anything could happen at any time. And of course, parents from wherever they were, our parents, were also petrified. Would they see their children again? Because so much was happening. मैं मतलब ये मेरा इतने की उम्र थी तो मुगलपुरा रेलवे स्टेशन गड्डियां आंदियां सन ते खूनो खून अपने जिहड़े पाकिस्तानी सन उधर ये मैं देखे ने बस। 10 दिन रात को गाड़ी चली, 2 बजे स्पेशल चलाई। उन्होंने कहा यहाँ सब लोग आए हुए हैं, यहाँ से फौरन एक ट्रेन चलाओ, मुसलमानों को सबको भरकर इधर लाहौर पहुँचाओ। खबरदार, असां जी हिंदुस्तान में माण्हुनि खे मारता, असां इहा बर्दाश्त न कंदासीं। हमको वहाँ से इस तरह निकाला गया है कि हम 3 कपड़ों में ही आए हैं और हम आपको भी इसी तरह ही निकालेंगे कि 3 कपड़ों में ही जाने का। रेलगाड़ी में दुनिया आ रही थी, इधर से गाड़ी खाली जा रही थी, उधर भर भर के आ रही थी। बाजी जी जख्मी हालतों में खूनो खून देखे हैं गाड़ी में, और हम ये नहीं सुबह से लेकर शाम तक उधर ही बैठे होते थे स्टेशन पे, बच्चे होते थे, हम बस ये देखा था। किसी ने अपना दुपट्टा बांधा हुआ, किसी ने कपड़े पाड़ के बांधे हुए जख्मी हुए थे, उधर से इंडिया से इधर आ रहे थे। रास्ते में कहीं ना कहीं पत्थर रखा हुआ होता था ताकि गाड़ी को रोक कर कत्ल कर लो। पाकिस्तान में आकर नहीं कुछ भी हुआ, जो कुछ हुआ इंडिया में ही हुआ। वो वहीं से कहते थे हम इनको जाने नहीं देंगे, यहीं कत्ल कर देंगे इनको। The trains, I can't tell you,
then I began to be a little aware something is happening, not just an extra holiday, something drastic is happening absolutely around us. I was surrounded by this atmosphere of fear. The trains were jam-packed. They were packed like sardines. And the trains, it was as if people had just stuffed bodies into the train. They were so packed, tightly packed. And on the top of the train too, you had people clinging on. Mummy was in the, as I said, in the police, and she wore her uniform, and her bosses had told her, okay, Mrs. David, what you need to do is to wear a cross. They gave her, I think, a silver cross, because kind of a large silver cross that she wore on her lapel, and hoping that if they were going to slaughter somebody, they would say, oh, we don't need to slaughter her just yet. But I just remember the station was packed, and it wasn't the kind of noise that you hear with rioting. It was just a horrible sound. Just people were frightened and pushing and shoving and trying to get on the train, and there was absolutely it's barbaric, actually. They were so desperate. It was fighting for their lives. To board a train, Hindus wanted to get away, Muslims coming off the train, and when they met up with each other, they realized that they were enemies. मुझे ॾिसंदे ॿ वाक़िया थिया. हिकिड़ी चाय में खाली पिया कराइनि फ्लैट, कुझु त थी वियूं, पर हिकिड़ी माई हुई, थुली हुई, उहा न पई निकिरे, उनखे हुन धिको ॾिनो, किरी पई. कॉलेज जे ॿाहिरो हिकिड़ो खैराबाद टी शॉप आहे, उन खां थोरो अॻिते आया चंडीगढ़ रोड सां वियो पिए त पुठियों माण्हू कढ लॻसि, ऐं हुनखे बंदूक त कान्हे, वॾा हुनखे पथर हथ ॾिया, हुनखे हयूं, हिकु ॿ, किरी पियो. The house I lived in was a Hindu house. The landlord, whoever, one of the Pakistani, weren't, well, I'm saying Pakistani, the man who rented it from us. He said, well, whatever they just use it, they're not going to come back. He was a Muslim, and very proudly he said, oh, they're not going to come back. Just use whatever it is, you know. हाँ, हमारे मददगार बैठकर बातें करते, खबरें सुनते थे. क्या खबरें? यही कि पाकिस्तान में ये जास्ती हो रही है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया की तरफ से ना ये बहुत जास्ती, बस इतना की खबरें सुनते थे. हम भी बच्चे थे उस टाइम, हम भी सुनते थे. ये हमें आपके अब जो अम्मा अब्बा होते थे वो क्या परेशान थे या कुछ होते थे कि? हाँ जी, जब ये लड़ाई झगड़ा हुए थे ना, मतलब पाकिस्तान में जब वड कट हुई है, तो मेरे वालिद साहब ये बहुत परेशान थे कि मतलब दुनिया नाल बहुत जास्ती हो रही है, साडे पाकिस्तानी जिहड़े उधरों खूनों खून होके आ रहे ने, बड़ी तबाही उन्होंने मचाई. बस जी इन्ना की, और साडे अम्मी अबू गल्लां करदे सी. No, I think the Christians were not really allowed to move. It was the Muslims who were moving, or the Hindus were allowed to move. That was the exchange. I don't think the Christians, I don't really know. I don't think the Christians had much of a choice, and I think they didn't take that choice. Hindu ji, जेके partition तरफ का पोइ मुल्क छॾे हिंदुस्तान हलिया विया, ऐं माइनॉरिटीअ में हूंदा हुआ मुस्लमान शहरनि में. गुरबत एतिरी हुई जंहिंजो तव्हां सोचे बि नथा सघो. माना त असांजे 90% माण्हू जेके असांजा वक़्तनि खे पेर में मामूली जुती जेका हाणे हिकिड़े रबड़ जी जुती जेका आम तरह मिले थी, इहा बि कान्हे. 90% माण्हुनि खे इहा
ऐसा ही नहीं था। कई लोग तो अपने कोटों के कॉलरों में छुपा छुपा कर पैसा 100-100 के नोट लाए। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं था। बाबे को कहा तो कहता मैं तो कल ले जाऊंगा। फिर बहुत दिलबाजी टूटा। ये कि काम करने को भी दिल नहीं थी करता। But heavens, I went to bed one day as a British subject, living in the subcontinent, and then one day they tell me you're a Pakistani, you need a Pakistani passport, and so that kind of angered me, you know. Why should somebody dictate to me what I should be? And then personally, पार्टीशन के बारे में जै पॉलिटिकल पार्टी सां मुंहिंजी उहा पॉलिटिकल पार्टीशन जे ख़िलाफ़ तंहिंजे करे ॻाल्हि सेंसिटिव आहे। तंहिंजे करे असांखे इहो तमामु बदतरीन शइ नज़र पई आई। असां ते पंहिंजे हिंदू उस्तादनि जूं महिरबानियूं जेके अॼु ॾींहं ताईं असां नथा विसारे सघूं। absolutely against that. And even now, I'm still absolutely against. Why did it happen? I'm going to say it. It was a stupid thing to happen. We're all human beings. And it's your choice whether you want to be a Muslim, a Hindu, a Buddhist, or no religion at all. देखो जी, ये देखो मुलाकात तो सारी खुदावंद की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, ये इकट्ठों में भी बड़ा बरकत है। तो अभी बाजी लहदा हो गए हैं, तो वो आप आगे खुद समझदार हैं। हम इकट्ठे ही बच्चे सारे स्कूल जाते थे और सब वहाँ जाके अच्छी तरह रहते थे। वहाँ पे बड़े अच्छे सलूक किया जाता था। कोई इस किस्म की कोई बात नहीं थी कि हाँ हमारे साथ कोई नारवा सलूक किया जाता है या कुछ किया जाता है। जास्ती दुख आया साढ़े मुसलमान भाई बहुत जख्मी होए। बहुत दुख आंदा सी बेटे। वो सानू पुत्तो दे पुत्र सी कोई आए हैं थले आन के फिका पै गए ते वो Somebody who living in Pakistan, who Lahore become Pakistan, and part of Pakistan, so they were not allowed to return. So for many, many people, it was a hard time. Jobs were lost, schools were lost, couldn't go back. And we used to be in Simla before, yeah. And that school, we couldn't go back to Simla. Nothing to go back to. This was their home, so they took the risk of living with the enemy, so to speak. And the Muslims took the risk of living within their enemies. And the Christians were caught up in between these two factions who hated each other. And I said, we're so useless, we got jammed in between. And it was no fault of ours because we chose to be Christians or our forefathers chose to convert. And so there was that feeling of suspicion. I didn't mean, as I say, we didn't have any Hindus around us, but Muslims. But I was a little bit wary of them because the feeling was so uptight about this is our land, this is our country, this is our policy, and this is the land for the Muslims. And I heard that a lot. I heard it a lot. And I said, then where do we fit in? And even as a child, it made a great impact on me. I said, where do we fit in? This is our land as well. Whether you convert, whatever your religion is, you're born and bred there. You have the culture of the language of the place. And then when it comes to something like this, a political issue, then you are totally nothing. And that's what the Christian community felt. And sad to say, I think sometimes they still do feel it, that we're not living in a country that's totally unbiased, you know. They say this is a Muslim country, and it should just be a country. तो मुसलमानों के साथ भी, हिंदुओं के साथ भी, क्रिश्चियंस के साथ भी कोई आजकल क्या लगता है आपको, मतलब दुख आंदा है पुत्र? क्या होता है उनके साथ कि उनको उनके जास्ती हो रही है? हमारे मुसलमानों भाइयों के साथ क्रिश्चियनों के साथ जास्ती हो रही है बेटे। दुख आंदा है। For those concerned and for those living, it's nice to belong to a place that's beginning to realize it.
there should be equality for all religions. हमारे बड़े भी बताते थे और वालदा वालिद कि हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक हैं, हम भाई भाई हैं। हम और दूसरी मतलब है हिंदू हैं, मतलब सिख हैं, उनके साथ नहीं, हमारे भाइयों के साथ मुसलमान भाई और क्रिश्चियन अभी भी एक हैं। और अल्लाह के हुक्म से आगे भी हम एक बनकर, एक भाई भाई बनकर ही हम चलेंगे। ये हमारे बड़ों ने हमारे दिमाग में ये बात पाई।